I really must appreciate the Honorable Justice R.K. Agarwal ji, the President of the National Consumer Dispute Redressal Commission, for his leadership to organize such a wonderful gathering, such a wonderful meeting today. I'm told it's the first time it's happening in many years. And I'm grateful to see such a good participation, such an outstanding response to this request. And I'm sure today is going to be a day of fruitful outcomes, which will transform the way consumers get redressal of their grievances in India. My esteemed colleague, Sadhvi Niranjan Jyoti ji, Honorable Mr. Justice R.K. Agarwal, Shri Rohit Kumar Singh ji, Ms. Nidhi Khare ji, Shri Anupam Mishra ji, all the distinguished principal secretaries and secretaries who have come in from all the states from across the country, presidents and members of the national, state and district commissions. I believe several representatives of consumer organizations are also amongst us here today. Friends from the media, distinguished ladies and gentlemen. I'm truly delighted to be here with all of you at this very important conference. To my mind, such a workshop providing a new idea and new engagement on the way we should all be providing relief to the consumers and getting an effective and speedy disposal of disputes, consumer complaints, is something that the country has been waiting for a very long time. Very rightly, Honorable Justice Agarwal talked about timely justice. He talked about justice being seen to deliver. And we've heard this idiom for very long: justice delayed is justice denied. I can not comment on what happens on the much larger cases of, of a dimension that go to high courts and Supreme Courts. But certainly, in consumer courts, it should be possible, very simply possible, to make sure that consumers get timely justice, speedy justice, and affordable justice. Mahatma Gandhi ji has famously said that consumer or customer is not doing us a favor. We are in a way, we should be obligated, we should be obliged. He is doing us a favor when he is participating in the marketplace as a consumer. And very often when a consumer is cheated, when a consumer is let down, when a consumer faces difficulty, I don't believe we can really knock on the doors of justice at levels of sessions court or district courts or high courts. We are the only hope that a consumer has before him. And that is why these commissions were made in the first place. The idea was to have a direct connect with the consumer, to give him speedy grievance redressal, and the effort was to be made by the commissions to dispose of cases within 3 months if they did not require analysis or testing, or at best within 5 months should they require significant amount of testing or redress or analysis. Sadly, it is not to be. And this is not a session where we are looking at any sort of blame game, either between governments at the center of the states, between what happens at the commissions, what happens with the legal framework, what happens with consumers. This is clearly not intended to be a session where we are going to cry about the problems. The idea behind today's very important workshop is to find solutions. And I do hope
during the course of the day, and I was seeing the program, I'm really impressed at the wide array of subjects that have been picked up for today's deliberation. And I'm so happy that there's a lot of participation from consumer organizations also. There's participation from presidents or members at the Consumer Commission level. And I think that's the way we can really find effective solutions, whether it is on mediation, whether it's on infrastructure, what needs to be done to upgrade the infrastructure of the district courts. All of these subjects, I believe, will collectively help us in delivering the speedy justice that Honorable Justice Agarwal mentioned, and will help us reduce this huge pendency in consumer courts. As of 14th June, just last week, the pendency at the National Commission was running into thousands. The pendency at the state commissions was over 1 lakh, and the pendency at the district commissions was over 4 lakhs. Now, this is something we cannot allow to be. And I think it should be the collective endeavor of all of us to see how we can change this situation. It can't be the work only of one Justice Agarwal or one secretary in the department, or possibly even one secretary in the state government. It will have to be a collective endeavor where we are all in it together. Each one of us can contribute in his or her own small or significant way. And I think when we sit down to address the issues that are causing these delays, you may find that it will be as simple as whether we can reduce the number of adjournments that we give, or we can reduce the long duration between two adjournments. I mean, that's something which is simply in your hands. Doesn't need any regulation, doesn't need any directive, doesn't need any orders. It's your choice. It's the choice of your commission, the members and president of your commission, to decide that, okay, we will not give adjournment for flimsy reasons. We will not go down the path of just insisting, oh, you've given us 2 copies, but you had to give 3 copies of a document, and therefore the case cannot be admitted. We need not be influenced by consumer activists or by big industry, either of the two, into causing delays. We need to get them on board also, make them understand the penal consequences of delay, and then take some decisions, at times harsh decisions, to ensure that in the future they do not misuse the benevolence that so far we have been providing to both the litigants and the persons against whom the litigation is going on. I think we'll have to seriously introspect whether the whole process through which a consumer has to go through can be simplified. That will actually encourage better compliance. That will encourage more consumers to be vocal about anything wrong that happens to them. And that will actually give a credibility to this institution of Consumer Commission, which sadly has not yet gained enough traction. And the more the pendency of cases, I suspect more and more people will stop filing cases. More and more people will believe it's easier to remain an unsatisfied consumer than to come to you and me for relief. And I certainly don't believe that's the intention of anybody in this room today. I believe each one of us have come together to see how we can change this situation. And in a way, it's not only about adjournments. I believe the whole process needs to be relooked at. I'm told very often, even admitting a complaint takes very long. While the law says that 21 days
is the maximum we have, and after that it's deemed to be admitted. I'm given to understand that frequently a small query is raised so that the 21-day deemed to be admitted does not become a reality. Or some inadequacy is found in the e-filing also, so that the 21-day rule does not apply. I would urge all of you in the course of the day today to have very, very serious discussions on how this 21-day can be used more effectively to at least reduce one part of our burden on admissibility. I would go to the extent of saying that why do we need any documents to be physical at all? Can all documents not be entirely online? If at all documents have to be physical, why do we need them in 3 copies at all? Can the registrar or the administrative machinery not just digitize those documents so that the physical documents can actually not be kept on record also? After all, in our whole government machinery, we don't have any physical records today. Everything is digitized. Our files move digitally. All documents that are to be submitted are accepted digitally, processed digitally. When we need to refer to any document, we only refer to a digital document. No physical document is referred to in any of the documents that come in our ministry. I don't see why the same cannot be followed by the commissions. Kindly note, this is not a court of law. This is a commission. And with the wonderful work that the Honorable Justice Chandrachud is doing on e-courts, I think we have a lot to learn from them. We can easily duplicate a lot of that work in the working of our commissions. And I would urge the secretaries from the states that a serious effort needs to go in at your level also. Central government is happy to support your work to upgrade the infrastructure. I think there is some sharing formula by which center and states work together. I would urge you, Rohitji, to kindly have a look at which states are not upgrading their infrastructure to the level desired. Give me a list. If required, I will talk to the chief ministers of those states to ensure that this is taken up in mission mode. This was also one of the subjects discussed in the recent conference of chief justices with all the state chief ministers. And I can assure you that we will work together as partners, the state and center, to provide the necessary infrastructure. What you could do, Justice, is that we could ask all the commissions at state and the district level to send in where they see the bottlenecks of infrastructure. And then we'll work with the state governments to see that that gets speedily fulfilled. Possibly we may also look at our level, whether the e-filing and the e-disposal infrastructure or the digitization infrastructure can be provided speedily by central government support. Maybe that could be one way, that even if the local government doesn't provide too much infrastructure, literally working from home, our honorable commission members and presidents will be able to provide justice if it is all through the digital world. And particularly after COVID, I think we need not complain about that. All of us have seen that we could manage the country's affairs and the economy despite such a severe challenge like COVID. And even video conferencing can be used for giving consumers a chance to present his case so that he doesn't have to be running around behind our commissions. The more we can simplify, the more we'll make it effective. And I'm told that some of the commissions still continue to have very long vacations. It's very unfortunate that we don't even have a common rule across the country about vacations. And I would urge all of you today to at least decide on your own suo moto that you're going to follow the central pattern on vacations. And if not, then maybe you will have to come up with a regulation. But if we can't work in a uniform pattern across the country, then it's a matter of serious concern and a matter of introspection
for all of us about our diligence, about our commitment to give effective and speedy justice to those who come before us. And I think each one of you have taken up the opportunity to serve the nation through the medium of these commissions. If there is anybody in any of our commissions who is looking at this only as a job, but not as a service, who is looking at this only as a title, but not as an opportunity to serve somebody who is in distress. And mind you, most of these consumers would largely be small people, would largely be people of limited means who are suffering. If we collectively cannot decide that for us this is a medium of service, then it will be a sad day for our nation. Because taking up a responsibility in a commission related to small consumers largely, we need to have that sympathy, that sensitivity towards our brothers and sisters, particularly the less privileged sections of society. A powerful consumer will probably never come to us. He will have other ways of sorting out his disputes. It is only the poorer person, the weaker section of society, which looks up to us as the first court of redressal, the first level to which they feel they can reach and get some relief. And therefore, I sincerely look at this as our collective moral responsibility. ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है. अगर उस भावना से हम इस काम को लेते हैं आगे, अगर हमारा विचार इसको सेवा के रूप में लेने का है, तो हमारे काम करने का ढंग भी बदल जाएगा. अगर हम इसे मात्र एक नौकरी के रूप में देखते हैं, फिर तो परिप्रेक्ष्य बदल जाता है. उसके बाद तो फिर कहने को ही कुछ नहीं रहता. मेरा तो आप सबसे विनती रहेगी कि अपने पूरी सोच को आज के कार्यशाला में दिन भर जब आप चर्चा करें, हम एक अलग सोच को लाने की कोशिश करें. There's so many things that come to mind when we discuss. Maybe we also need to see whether those who are giving frequent adjournments, those who are not doing the disposal of the case within 3 months or 5 months, what actions can be taken? अगर उनकी इच्छा नहीं है सेवा करने की, तो भाई उनको और कुछ काम में सेवा करना चाहिए, और किसी रूप में उनको सेवा करना चाहिए. हमारे कमीशन के काम को क्यों? और साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कुछ बंचिंग ऑफ केसेस हो सकते हैं क्या? सिमिलर केसेस बहुत होंगे हम सबके पास. क्या हम बंचिंग ऑफ केसेस कर सकते हैं? किसी प्रकार से लोकायुक्त के रूप, लोक अदालत के रूप में फास्टर डिस्पोजल कर सकते हैं क्या? छोटे लोगों को ना आना पड़े छोटी छोटी कंप्लेन के लिए, उनके कंप्लेन के बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है क्या? बिना उसकी नोक झोंक में जाए कि इसने शब्द ये नहीं इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया, या कागज साथ में ये दिया नहीं दिया. कुछ केसेस जहां पे आपको ध्यान आता है कि ये गंभीर है, जिसमें काफी लोग प्रभावित होते हैं, चाहे केस 1-2 ही हो, क्या कुछ डिटरेंट हो सकता है? कुछ डिटरेंट पनिशमेंट हो सकती है, जिसके लिए जरूरत पड़े तो नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन से आप सलाह मशुरा कर सकते हैं. शायद हाल में ही हमने एक केस में किया था एट द नेशनल लेवल, एक बहुत डिटरेंट के रूप में सिवियर पनिशमेंट दी बड़ी कंपनी के ऊपर, और फिर उनको काफी सिवियर फाइन्स भी लगाए, और शायद उसके बाद उन्होंने टोटली डिसकंटिन्यू किए वो प्रैक्टिसेस. दे वर अंडर सिवियर प्रेशर के इसका घातक परिणाम होगा. क्या केंद्र से हम ये देख सकते हैं कि जो ऐसे केसेस में कुछ
बड़े लोग गलत काम करते हुए दिखाई देते हैं, उसकी जानकारियां कॉमन मैन जनता तक पहुंचे, जिससे उनके बिजनेस पे असर पड़ना शुरू हो, तो आगे से वो कंज्यूमर को और सीरियसली ले, कंज्यूमर के साथ विश्वासघात ना करें, धोखा ना करें। मुझे लगता है आज की कार्यशाला में आप लोग कुछ इनोवेटिव सोचिए, जिससे वास्तव में कंज्यूमर को हम सब पे विश्वास पड़े। जब हमारे पास आते हैं तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि न्याय मिलेगा, और जैसा जस्टिस अग्रवाल ने कहा, समय पे न्याय मिलेगा। जैसे ई फाइलिंग अलाउ किया है, तो ई डिस्पोजल को भी प्राथमिकता दीजिए। क्या ई डिस्पोजल फास्टर हो सकता है क्या किसी तरीके से? डिजिटाइजेशन के बारे में अगर केंद्र से जो भी जरूरत पड़े उसको हम करके सबको सक्षम बनाएं फॉर ई फाइलिंग, ई डिस्पोजल। और मेरे ख्याल से नोटिस भी भेजना है, हियरिंग भी करनी है, ये सब चीजें व्हाट्सएप पे हो सकती है, ईमेल पे हो सकती है। यू मे एटवर्ड्स फॉलो इट अप विद ऑल्सो अ रजिस्टर्ड मेल, या जो भी आज आपका सिस्टम चल रहा है। पर मुझे लगता है एक बार कोई ई फाइलिंग करे तो रजिस्टर्ड मेल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पूरा प्रोसेस ही इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। जहां तक कंप्लेनेंट की बात है, जहां तक जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है वो सब तो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनको फिर हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने रेगुलेशन में। पता नहीं क्या रेगुलेशन बोलती है कि भाई सभी कुछ ईमेल प्लस व्हाट्सएप, ऐसे कोई दो माध्यम पे हो, उसके बाद रजिस्टर्ड मेल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़े तो जस्टिस अग्रवाल हमें गाइड कर सकते हैं कि इसका क्या माध्यम हो सकता है जो कानून में भी खड़ा रह सके और व्यवस्थाएं भी सरल हो। और मुझे लगता है कि जो लोग रिपीटेड एडजर्नमेंट मांगते हैं उनका पर्दाफाश करना चाहिए, जनता के बीच में वो बात आनी चाहिए। और ऐसे लोगों को फिर एक जमाना आएगा कि कंज्यूमर भी बहिष्कार करेंगे, जो लोग ऐसे गलत प्रैक्टिसेस करेंगे। और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनका भी विश्वास बढ़ेगा कि हाँ कंज्यूमर के साथ न्याय हो रहा है। और मैं देख रहा था कि कई अच्छे संस्थाएं और कई सीनियर एक्टिविस्ट आज की कार्यशाला में भाग लेने वाले हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी हमें मदद करें, कैसे हम इसमें वास्तव में कंज्यूमर उपभोक्ता को लाभ पहुंचा सके, उनको न्याय दिला सके, समय पे दिला सके। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उसके ऊपर भी हमने काफी कुछ एक्शन लेने की कोशिश की है। हाल में कुछ रूल्स वगैरह भी निकाले। अगर आप लोग के कुछ सुझाव हो जिसमें उसको भी सुधारा जा सके, या आपके ध्यान में कोई केसेस आते हैं जो इस माध्यम से गलत काम करते हैं, तो वो भी जरूर लिखित रूप में पत्र लिख के, आज तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, पर हमारे समक्ष रखिएगा या हमें एडवाइस करिएगा या हमारे तक पहुंचाइएगा। हम चाहते हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से भी जो धोखा होता है कंज्यूमर का, उसको भी रोक लगाई जाए, और जो मापदंड के हिसाब से ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता है, जिस प्रकार से जो कहा जाता है वही असलियत होनी चाहिए, उसके ऊपर और बल दिया जाए आगे आने वाले दिनों में। मीडिएशन के ऊपर भी शायद आज आपने सेशन रखा है। मीडिएशन एक माध्यम बन सकता है एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का। शायद पैसा भी बचेगा, लोगों का खर्चा, उनका समय, और मीडिएशन भी कई बार एक अच्छा तरीका होता है जिससे दोनों तरफ समझ जाते हैं कि भाई आगे ऐसा गलत प्रैक्टिस नहीं करना है। तो मुझे लगता है इसको भी प्राथमिकता दी जाए। मुझे बताया गया 153 डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं, 11 स्टेट कमीशंस हैं और नेशनल कमीशंस, जिन्होंने मीडिएशन सेंटर ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है। अगर हम उनमें कम से कम मीडिएशन को और बढ़ावा देके तेज गति से केसेस डिस्पोज कर सके, तो बाकी सबके ऊपर भी एक प्रकार से मॉरल प्रेशर आएगा कि उन्होंने भी इस माध्यम को फिर अडॉप्ट करना चाहिए।
बाकी जिन्होंने नई सेटअप किया उनसे भी अनुरोध है कि सिर्फ 11 राज्यों ने क्यों मीडिएशन सेटअप किया, बाकी स्टेट कमीशन क्यों नहीं कर रही हैं। जस्टिस अग्रवाल, आपने भी चिंता करनी चाहिए कि उसमें वजह क्या है, कोई वजह तो बताए ना कि वो क्यों नहीं सेटअप कर। अगर जिन्होंने सेटअप कर दिया और डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए सेटअप किया है, तो हमने, मुझे लगता है, थोड़ी बहुत सोच विचार करना पड़ेगा कि इस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। जो लोग अपने काम में कमी कर रहे हैं, काम में किसी प्रकार की भी चुस्ती नहीं दिखा रहे, तो इस प्रकार से मिलजुल के अगर हम काम करेंगे तो वी कैन अचीव द वर्ल्ड। अगर हम सिर्फ इसको एक जॉब के रूप में देखते हैं तो सर्टेनली कोई कभी उम्मीद नहीं रखेगा हमारे ऊपर। हमारे ऊपर अगर उम्मीद उठ गई तो उपभोक्ता के पास कोई और साधन नहीं रहेगा। मैं तो इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो अलग अलग माध्यम इन्होंने बनाए हैं आपको सेवा देने के लिए और आपको कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, अनफेयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्वालिटी के ऊपर, या कुछ सर्विस हो तो सर्विस में अगर कोई गलत काम कर रहा है, कुछ प्रॉमिस कर रहा है लेकिन डिलीवरी में फर्क है, कोई प्रॉमिस कर रहा है लेकिन एल्गोरिथम्स वगैरह यूज करके अपने आप ही उसको अपनी कंपनियों को ही प्राथमिकता दे रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा है, कई चीजें आती हैं। इन सब चीजों पे प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर आप लोग एक्शन लीजिए। कोई बहुत छोटी चीज होती है उसको भी अगर हम लंबा खींच देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और कोई बहुत बड़ी चीज होती है उसको लंबा खींचेंगे तो गलत चीज चलती रहेगी और हजारों लाखों लोगों को नुकसान देगा। तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दोनों को अर्जेंसी है, लेकिन हमारे काम करने में जरूर हम प्रोपोर्शनैलिटी देख सकते हैं कि छोटी मोटी कंप्लेंट फटाफट एक ही हियरिंग में खत्म हो, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं हो। आप हियरिंग एडजर्न करोगे, अगली बार उपभोक्ता आएगा ही नहीं। पर अगर आप बड़े सीरियस केसेस हैं उसकी गहराई में जाते हैं और गहराई में जाके उसके ऊपर न्याय देते हैं तो उसका लाभ भी बहुत बड़े वर्ग को होगा। तो आपके हाथ में जो पावर है वो पावर छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़ी पावर है। उस पावर को अगर हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि जब हम 75 वर्ष भारत की आजादी के सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर, और जब हम देश के अगले 25 वर्ष का अमृत काल के चर्चा करते हैं और उसके लिए देश को तैयार करते हैं, तो उसमें एक अहम भूमिका हम सब की भी रहेगी। कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर इज सेंट्रल टू ऑल आवर एक्टिविटीज, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, और चाहे हम सब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सब मिलके, जो माननीय जस्टिस अग्रवाल जी ने कहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसको बहुत स्ट्रिक्टली अपना मंत्र बनाएं, अपना मूल मंत्र बनाएं। लेट अस लुक एट this as the central theme on which each one of us will serve the country. Let us all try and see how we can simplify procedures. Let us all see how we can get out of any malpractices that may be happening in our offices and our commissions. And collectively, I am very, very hopeful that today's sessions, with the best of minds in this field, sitting in one room, will lead to significant introspection. एक मंथन के रूप में आज का ये कार्यशाला काम करे, कैसे निष्पक्ष न्याय मिले लोगों को, समय पर न्याय मिले, पारदर्शी न्याय मिले और अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा खर्चा ना हो, उपभोक्ता का खर्चा ना हो, किसी का ज्यादा खर्चा ना बढ़ाते हुए समय सीमा के अंदर आगे से अगर हम न्याय दें तो मैं समझता हूं कि सही माने में हम सबके काम का लाभ भी जनता को मिलेगा और उसका प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था,
और भारत के लोगों के विश्वास पर कि अगर मेरे साथ कोई गलत होता है तो मेरे साथ कोई खड़ा है, कोई मेरा हाथ थामेगा और मुझे पूरी तरीके से कष्ट से भी निवारण मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। ये आप सबके हाथों में है। आपके हाथ मजबूत करने के लिए हम सब पूरी तरीके से तत्पर हैं और मेरा विश्वास है कि आज की कार्यशाला के बाद अगले 6 महीने में हमारा जून में, दिसंबर या कभी जनवरी में होता है, दिसंबर में नेशनल कंज्यूमर डे, तो हम सोचे इस बार के दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे पे फिर एक बार एक रिव्यू के लिए हम सब इकट्ठे हों, इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में। आज आइडियाज का सेशन हो, आइडिएशन हो, दिसंबर में रिव्यू के लिए जब हम सब मिले तब तक सिग्निफिकेंट एक्शंस हो, चाहे डिजिटाइजेशन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग केसेस, चाहे एडहेरेंस टू टाइमलाइंस, 21 दिन, 3 महीने, 5 महीने, उसके लिए BIS में आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि कोई भी कंज्यूमर कोर्ट को या कमीशन को अगर कोई भी चीज टेस्टिंग या प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है तो हमारे BIS की, हमारे NABL एक्रेडिटेड सब लैब्स को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो तुरंत उसको प्रायोरिटी पे करके इनको रिजल्ट्स पहुंचा दे। BIS तो फ्री में कर दे, टोटली जो भी सरकारी व्यवस्था है वो फ्री में करे, तो उसके ऊपर भी समय नहीं बीतेगा, समय नहीं खराब होगा। ऐसे करके कुछ इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस आज निकले और दिसंबर में उसके रिव्यू के समय कम से कम, जो आज मैंने पेंडेंसी एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास है, मैंने जान के नहीं सुनाए, मैं कोई गलतफहमी नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि हमने किया, आपने किया, किसी और ने किया, हम सबको मिलके इसका सलूशन निकालना है। हम कोशिश करें कि जब हम दिसंबर में मिले तब तक ये कोई कंप्लेन ना हो हमारे ऊपर कि 21 दिन में एडमिसिबिलिटी के ऊपर कोई कंप्लेन ना आए, और हो सके तो जितने केसेस 3 महीने विदाउट एनालिसिस या 5 महीने विद प्रोडक्ट टेस्टिंग जितने हैं उसको हम डिस्पोज करने के लिए एक मुहिम चलाएं आज से लेकर दिसंबर तक, और फिर यहाँ पे रिव्यू करें, और हो सके तो रिव्यू के समय सेलिब्रेशन का मौका मिले और रिजल्ट्स इतने अच्छे हो कि दैट रिव्यू कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ सेलिब्रेशन। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Minister, for your remarkable address, for your guidance, for your wholehearted support. Thank you very much for gracing today's event with your benign presence. और अब निवेदन है श्री अनुपम मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कि वह उद्घाटन सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ करें। धन्यवाद। विजन फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के इस राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला के इस महत्वपूर्ण दिवस पर धन्यवाद ज्ञापन देते हुए मुझे अत्यधिक सम्मान और गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से हमारे माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो अपने अत्यधिक बिजी शेड्यूल के उपरांत हम सब के मध्य आज यहाँ उपस्थित हैं। विभाग की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज आपके द्वारा निर्धारित रोड मैप को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मार्गदर्शन और आगे की प्रेरणा के लिए आपकी ओर देखते रहेंगे। मैं माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और रूरल डेवलपमेंट की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपके अनवरत सपोर्ट के लिए मैडम आपको कोटि धन्यवाद। I would also like to acknowledge our gratitude to Honorable President NCDRC, Sri R.K. Agrawal ji, for your key suggestions, which reflects your deep insight in the issues and challenges faced by the consumers. मैं सचिव उपभोक्ता मामले श्री रोहित कुमार सिंह और मैडम निधि खरे, एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हम भाग्यशाली थे कि हमें वरिष्ठ अधिकारियों का पूरी तरह से समर्थन मिला, जिन्होंने इस आयोजन को पूरा करने के लिए प्रत्येक चरण में हमारा मार्गदर्शन किया। I also express my sincere gratitude to all the members of the National Commission,
President and members of the State Commission, senior officers of the state governments and union territories, presidents of district commissions, विभिन्न उपभोक्ता संगठनों, media, who have always been very helpful and supportive in taking our message on consumer awareness forward. Such events cannot be completed without the groundwork and support of the team who work tirelessly to ensure successful completion of the program. I thank Alok Verma, Director, Consumer Protection Unit, Mr. Natarajan, and the entire team of officers from DOCA who worked tirelessly towards making the event a grand success. The success of today's event is the result of cumulative efforts, teamwork of all of us. इसके साथ ही उद्घाटन सत्र के इस समापन की मैं घोषणा करता हूं। धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, once again, a round of applause for the esteemed dignitaries present on the dais. Thank you very much for gracing this event with your esteemed and benign presence. Before I conclude, I have an announcement to make. If the speakers of the upcoming session have a presentation to make, they can submit the same to the IT team available at the console. And now we will pause for a 15-minute tea break. And I request all the participants to please reassemble at sharp 1:15 p.m. for the first technical session. Guests and Department of Consumer Affairs officers under Secretary and above are requested to please